I think we have almost 50 participants, so I think we shall start the lecture. As we discussed last time that we discuss orientation relationship, which is one of the relationship from your maxillomandibular relationship family. What we did last time, we discussed that how we will correlate your mandible to your maxilla or your cranium, better to say. As we discussed that there are some anterior reference points like your nascion, infraorbital, then your L of the nose. These are the anterior reference point, and then your posterior reference is somewhere 13 millimeter in front of your tragus at your this outer canthus to your tragus line. So this is your posterior reference or your external auditory meatus. In some of your face bows, we used to use this posterior reference. If we connect these references to each other, we would have a triangle of reference. So what we used to do, we used to refer our maxillary teeth in relation to this point of this plane of reference or triangle of reference. So wherever is our maxilla placed according to these references, we try to record it with the help of your face bow, and we transfer it over your articulator in the same position. By that way, we will be able to have a same mechanics as we used to have for your jaws. ये objectives है simple कि हमने सेम मैकेनिक्स प्रोड्यूस करनी होती है आर्टिकुलेटर्स के ऊपर, उसके लिए हमें सेम पोजीशन चाहिए ऑफ योर जॉ. इसका बहुत सिंपल सा मिसाल है कि अगर आप इफ यू हैव अ डिवाइडर, यू जस्ट हैव अ डिवाइडर, यू ओपन इट एंड ट्राई टू मेक अ आर्क. जितना आप इसको खोलते जाएंगे आर्क का फॉर्म डिफरेंट होता जाएगा. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज योर jaw movements, up and down movements, is basically the arc of closure depending on this distance, anterior posterior distance of your maxillary or the mandibular teeth. जितना ज़्यादा आगे की तरफ place होगा उसका arc different होगा, जितना पीछे होगा. So we have to record it. इसमें ज़्यादा और कम की बात नहीं है. Whatever the patient is having, there you have to record it and transfer it over your articulator. So today we have vertical, as I mentioned that we discussed the vertical relationship, but prior to vertical relationship, there's one more thing which is important. As we discussed last time, orientation relationship. But there is one more thing, that is your occlusal plane orientation. Do not mix both of these things. Orientation relation is different than your occlusal plane orientation. If you can see these photographs there, you see the curvature of your occlusal surfaces of your teeth. There is a plane there which is touching down these all occlusal surfaces there, and the mean of this curvature is called occlusal plane. This line basically, अगर आपको ज़्यादा confusion हो रही है तो ये आपकी जो occlusal surface है, इस पर से एक line, imaginary line समझें कि इसके ऊपर से गुजर रही है.
this line is basically representing your occlusal plane. So this occlusal plane orientation is different from your orientation relationship. Orientation relationship is a maxillomandibular relationship where your maxilla is related with your mandible or mandible is related with your whatever you want to say. लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है. यहाँ you are just discussing the intra arch relationship, means the same arch relationship. यहाँ कोई दूसरी arch involved नहीं है. Same arch में हम बात कर रहे हैं कि ये जो curvature है, this is called occlusal plane. इसकी orientation means when you are treating an edentulous patient, you don't know where to keep this occlusal surface. Normally क्या होता है कि ये जो जबान से आप ऊपर occlusal plane रख लेते हैं, उससे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, या बहुत ज्यादा नीचे ले जाते हैं, उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. वो पोजीशन जहां आपने इस occlusal plane को रखना है, that is basically occlusal plane orientation in maxilla and in mandible. See here, this is the osseous representation of your jaws after the extraction of your teeth. ये जो black dotted line है, ये represent कर रही है कि आपका mandibular planes has to be, established at this level, and your maxillary plane has to be established at this level, and this space is necessary when your patient is seated in a relaxed position. वो हम आगे vertical relation में बात करेंगे कि ये space क्या है और क्यों जरूरी होती है. So कौन से factors हैं? How you would come to know where to establish your occlusal plane? Height. कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है occlusal plane को? This is not in your hand. This is not in my hand. You have to consider certain things. Which factors हैं? You have to see those factors. Then you come to know where to keep this occlusal plane. Past में, when you were in second year, we used to say that कि आपका upper जो maxillary है वो 23 या 22 मिलीमीटर या 21 to 23 मिलीमीटर रेंज में होना चाहिए, और लो हाइट जो है उसकी, और जो लोअर occlusal plane है उसकी हाइट 18 मिलीमीटर होनी चाहिए. This is the average height of your occlusal plane, but this average is just to make your job easier in your patients there. Otherwise, the final decision would be according to the certain anatomical landmarks available in your jaws there. वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से landmarks हैं जिनको हम consider करते हैं while establishing the height of your occlusal plane in your patient's jaws. सबसे पहले स्टैटिक्स देखते हैं कि हाइट ऑफ occlusal plane कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ रखना है. मैक्सिलरी दांत जो है आपके 2 मिलीमीटर, जब पेशेंट इज सीटेड इन अ रिलैक्स पोजीशन, योर अपर टीथ शुड बी विजिबल बाय 2 मिलीमीटर इन अ नॉर्मल केस. देन posteriorly a Camphor's line, ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि Camphor's line क्या होती है. लीनिया अल्बा आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, और पैथोलॉजी में इस हाइपरकैरोटोसिस या कैरोटिक लाइन है along with the occlusal plane, but ये it is only available when your patient is recently edentulous. Otherwise a long period went off, तो आपको ये लीनिया अल्बा, you don't find this लीनिया अल्बा in patients now. There is a correlation of your occlusal surfaces with this लीनिया अल्बा there. Then functions में phonetics है, F and V sounds हैं. ये अभी हम आगे भी चलेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. If you just observe on yourself, when you pronounce F sound, your maxillary teeth used to hit the lower lip, the inner part of your lower lip. F or V sound, दोनों में. So if you have the position or the occlusal plane is established as a correct level, you are able to perform this F and V sound. अगर आपने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, if you place your teeth or your vaccine bit higher, then it's difficult to produce these sounds there, or bit more deeper there, even though it's very difficult to perform these sounds there. Then the plane below the greatest convexity of the tongue. Dorsal surface of the tongue जो होती है, mandibular की बात की जाए, mandibular occlusal plane की, dorsal surface means the top surface of your tongue. Say occlusal plane is always used to keep below this level, slightly below this level. Why? If you keep it up, it's very difficult for your tongue to place the food over your occlusal surfaces. So you always keep your occlusal surface below your dorsal surface of your tongue. Otherwise, your patient may complain that I used to try to masticate my food, but I am not be able to masticate my food. It always rotating in my mouth. I do not enjoy my food.
So then parallelism of the ridges, ये मैं अभी आपको बताता हूँ. Anatomical factors में no specific landmark posteriorly, anteriorly, corner of the mouth is very very important, and then the retromolar pad. वो अभी हम एक एक करके सारे landmarks को discuss करते हैं कि क्या है ये. See this anteriorly, your occlusal plane मैंने आपको बताया 2 millimeter. It has to be 2 millimeter below your upper lip, but it must be parallel on both sides. ऐसा नहीं है कि ये slant कर रहा हो, इस तरीके से तिरछा हो, incline ना कर रहा हो. It must be equal on both sides. You can see here, it's slightly, the gap from here to here is slightly lesser than this area. That means your occlusal plane is not equal on both sides. How you would balance it, you can see in this photograph here, it's balanced. From pupil of the eye to the pupil of the eye, you just draw one imaginary line, or you can keep your ruler there, and then you place the upper rim in patient's mouth and place a canvas plane. अभी मैं दिखाता हूँ canvas plane क्या होती है. थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं इसको आगे. This is your canvas plane. This thing is your canvas plane. This area has to be placed over your rim, and this would comes out of the patient's mouth. So you in interior region from this area to your Fox's line, जिसको हमने ऊपर बताया था कि जो इंटरपिपुलरी लाइन है, वहां तक का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर भी देखेंगे और राइट साइड पर भी देखेंगे. So you place this canvas plane in patient's mouth like this, and you try to evaluate the distance from pupil of the eye to this area, pupil of the eye to this area. It must be equal on both sides, keeping in consideration that your 2 millimeter visibility for your maxillary occlusal plane must be ensured. Then after that, posteriorly, you draw a line from the L of the nose to the tragus. This is called ala tragus line. जो पहले हमने line discuss की थी, वो outer canthus से tragus तक थी. समझ रहे हैं, जो हमने orientation relation के लिए की थी. In this case, you draw a line from the tragus of the ear to the ala of the nose. This is called ala tragus line or canthus line. इसको canthus line भी कहते हैं. तो बाद में डिस्कस करते हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ देखें ये रिट्रोमोलर पैड है इन पेशेंट्स माउथ. दिस इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क वी डिस्कस इन योर मैंडिबुलर जॉ एनाटॉमी. एक पियर शेप मैंने आपको प्रोट्यूबरेंस बताई थी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू देयर. बताया था कि इंटीरियर 2/3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लाइन बता रही है, यू हैव डिवाइडेड इट इनटू दिस पियर शेप एरिया इनटू टू portions. One is the upper 1/3 and the lower 2/3. This is the boundary of your denture. Beyond this, you will not extend the denture. So your occlusal plane height is always be kept. ये यहाँ पर है. For example, if this is on this level, so you have to keep your occlusal plane like this. If you just follow my cursor there, this is the level of your occlusal plane for your mandibular case. So retromolar pad का 2/3 level is very very important. Second thing मैंने आपको बताई थी, it must be below the dorsal surface of the tongue. Third चीज मैंने आपको बताई थी, it has to be at the level of your corner of the mouth. Like see, if I open my jaws, you will find that my teeth are following the lower lip height there. If you keep it up, you are trying to spoil so many of the things there. वो अभी हम आगे जाके बात करते हैं. See the position of your anterior teeth, 2 millimeter visibility following the lower anatomy of your lower lip. This is smile line. ठीक है, ये भी important है to establish your occlusal plane. तो आपने जब patient is smiling, your upper teeth are hitting down the lower teeth during smile, the lower lip, and following a curvature there. If you just see this, you have a specific curvature there. So this is the aesthetic consideration for your occlusal plane establishment. ये जब होगा जब आप ट्रायल कर रहे होंगे. दिस इज योर कैम्फर्स लाइन, जो मैंने आपको बताया था एला ट्रेगस लाइन. देख ड्रॉ की हमने,
और कैम्फर्स प्लेन जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था वो पेशेंट के मुंह में इंसर्ट किया, उसका इंटीरियर रीजन यहाँ आता है, पोस्टीरियर रीजन यहाँ जाके एक्सटेंड करता है. You just see this. This is your campus plane. This is the anterior area. You will insert this in patient's mouth, touching the occlusal plane there, the wax rim there. This will extend out and will come in this area like this. Over here, you will draw a line from L of the nose to the tragus area, and you just correlate that whatever the distance you are getting on this side must be on this side. अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो आपका occlusal plane सीधा नहीं होगा posteriorly, एक साइड पर नीचे होगा, एक साइड पर ऊपर होगा. So your occlusal plane is not going to be balanced in your later on when you try to, establish the occlusal plane in patient's mouth. So this is called Camphor's line or alatragal line. जो भी आप इसको कहना चाहें, both the names used to use in your books there. Then this is your linea alba. This is the hyperkerotic zone. Usually lies at the level of where your upper and lower teeth meet together. That is called occlusion. So this always you will find in patients where you have a recent extraction. Otherwise, in edentulous patient for a longer period of time, you do not find this line there. See this 2 millimeter showing through your upper lip. This is the aesthetic consideration for your occlusal plane considerations. This is called Camphor's plane or Fox's plane भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम इसका Fox's plane भी है. This is your alatragal repetition, alatragal line. See here, you just insert this Fox's plane in patient's mouth and try to correlate this line with this arm extension of your Fox's plane there. This distance must be equal on both sides, the left side and the right side. Nothing more than that. See here, as I told you this, if you just concentrate on this photograph here where my cursor is there, it has to be at the level of your lower occlusal, the lower occlusal plane must be at the level of your lower lip. If it is above this level, that means your occlusal plane is not correct. Posteriorly, it must be at your retromolar pad, and it has to be below the dorsal surface of your tongue. If you just see this, this must be below the top surface of your tongue there. So if you keep these things in your mind and you try to establish the occlusal plane, you would have a, the vertical dimension establishment is a 5 minutes job. But if you are, doing the things without knowledge and its execution, the things might be difficult for you to establish. So again, you can see here, this occlusal plane is below the dorsal. This is the dorsal surface of your tongue. This is below the dorsal surface of your tongue, the occlusal plane. Understanding is very, very important. Then you establish the labial fullness there of your rim there, the wax rim. This angle, this is called columella-filtral angle. This must be 90 degrees in most of the cases. But if your nose is a bit tipped, जिसको तोते वाली नाक कहते हैं, if it is more tipped, or your jaws or your face form is triangular, or जिसको आपने tapering कहा था, then you keep this angle slightly more. 120 तक भी कर सकते हैं इस एंगल को, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में where you have a tapering jaw profile, you might have a more proclination of your anterior teeth. तो उसमें थोड़ा सा ये procline हो सकता है. So you can say that it ranges from 90 degree to your 120 degree, depending on your case-to-case variations there. So by that way, you can establish the labial fullness in patient's mouth. So that was the establishment of your occlusal plane. Vertical dimension करने से पहले या orientation relation करने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं. It's best to do this thing prior to your vertical dimension and orientation relationship. पहले आप थोड़ा ये मैं भूल गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है आपके. Prior to doing anything, you just try to establish the orientation of your occlusal plane. It's not a orientation relationship. This is orientation of your occlusal plane. फिर आप ओरिएंटेशन रिलेशनशिप कर लें, फिर इसके बाद वर्टिकल डायमेंशन करेंगे. वर्टिकल डायमेंशन क्या है, इसकी दो डेफिनेशंस हैं.
You just mark two lines, two dots, one at the base of your nose and other at the chin area there. And ask your patient to close the teeth if your patient is having teeth. Mark the distance from these one dot to the other dot. That distance is your vertical dimension. This distance is your vertical dimension in a dentate patient. This is called vertical dimension of occlusion. This is very easy. In a dentate patient, it's already established by the nature. You close the jaw like this and you measure the distance. This is your vertical dimension of occlusion in a dentate patient. But unfortunately, in a complete denture patient, you do not get this facility of your vertical dimension of occlusion. So this is alarming for us how to record it and how to transfer it over your patient, the vertical dimension of occlusion. As we know that as a newborn do not have teeth there, but your vertical dimension is established but as your teeth used to erupt there. So how come it's possible that a newborn without a teeth, when the teeth used to erupt, they used to occupy a specific space, and we discussed so many anatomical landmarks we have correlated with the occlusal surface orientation there. So that means if you lose the teeth, does not make any difference. You have other clue there, other reference there to establish the vertical dimension, and that reference is your muscles. God has given you the elevator muscles. We have discussed the elevator muscles. The masseter is the most important elevator muscle there. So whenever you close or open your jaw, you close it at a specific height. This is my specific height where my teeth are meeting there. So my elevator muscles used to contract and used to relax, used to contract and used to relax. That means my muscles are contracting at a specific length and relaxing, contracting and relaxing. So this contractile length is basically my vertical dimension of occlusion. So this is there. If even I lose my teeth, this contractile length of my muscles are there. So how would you establish it? It's very easy. When your muscles get relaxed, why they got relaxed? Because to regain the energy. Whenever they are contracting, they are spending their energy, and when they need more energy, they used to relax. So whenever we are seated, we never close down our teeth continuously. We just close the jaws during swallowing, during speaking, during mastication. Otherwise, when we are sitting relaxedly, you would find that there is a space between your teeth, upper and lower teeth. And this space, why the nature established this space? So to allow your muscle to regain their energy. This state of muscle is called physiological rest state of your muscles, where they used to have their maximum tone, tenacity or energy. So this repeated contractile length of your elevator muscle, this is the second definition of your vertical dimension of occlusion. This is basically a vertical dimension of occlusion. And this is the mechanical definition, distance between two selected points. So how will you determine the vertical dimension? As I told you, mark 2 points, one as at your chin and other as your nose tip or at the base of your nose. Ask your patient. This is the rest vertical dimension, one of the type of your vertical. As I told you, when you lose your vertical dimension of occlusion, we are provided with the vertical dimension of occlusion. Why? Because we have occlusion. But when we lose teeth, we do not have vertical dimension of occlusion, but we want to establish the vertical dimension of occlusion by giving the dentures to your patient. So what we do, we try to focus on your vertical dimension of rest. When you do not have vertical dimension of occlusion, you always focus on your vertical dimension of rest. So what is the vertical dimension of rest? It's a postural position. It's a postural position of the mandible when an individual is
resting comfortably in an upright position, and the associated muscles are in a state of their mild contraction. Like this patient is sitting there in a relaxed state, head is upright there. So your muscles got, as I told you, they used to be in a position of your rest. They are trying to re-obtain the energy there. Means in a mild contractile, this is the mild contractile state. When you chew or you masticate, these muscles used to exert the force and spend the energy. So this state, the rest state, is the mildest form of your contraction of your muscles there. They are trying to regain the energy. So what we used to do, we ask the patient to be seated comfortably like this. Mark 2 points, one at your nose, another is at your chin, or at the base of your nose, or at the chin, the least movable part of your chin. Then the head must be upright. Patient is asked to be seated. Relax. Insert the maxillary occlusal rim in patient's mouth. Do not insert the mandibular occlusal rim in patient's mouth, and try to measure this distance with the help of your ruler there. Whatever the distance is coming is called vertical dimension of rest, VDR. So how you will establish the tentative vertical dimension of rest? Just quickly go through. Patient must be sit comfortably looking straight ahead. Insert the maxillary record base. Place a point's reference on the nose and the chin. Instruct the patient to lick lips and swallow. उस patient को कहें ज़बान को अपने lips पे घुमाए और comfortably seat हो जाए. Then mandible comes to the rest position. Measure the distance. Okay, from between two different points there. Then repeat, ask the patient, take the reading and note it down. Then again ask the patient to say M sound where your upper and lower lips are coming together. Okay, so this is the passive position or vertical dimension of rest. When you say M, your teeth are not meeting with each other. You always find a gap between your teeth. So that position is your basically vertical dimension of rest. Then your facial expression, you just see this. Facial expression recognizes you just see that whether your patient facial expressions are normal, you see this pout area, you see this columella filtral area there, then you see this nasolabial sulcus there. If you find that these are normal in appearance, you don't have any elongation of your face और nose chin approximation कभी कभार बहुत नजदीक में भी नजर आएगा, क्लोज ओपन भी नजर आएगा. अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसको, आपको तस्वीर में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्टिकल कम हो सकती है, किस तरीके से ज्यादा हो सकती है. So you just focus on this area whether it's normal or not. So all the three readings must coincide with each other. All the three readings means when you say M sound, when you ask your patient to moisten the upper lip and then swallow and seated comfortably. These all three readings must be coincidental. अगर ये coincidental नहीं है, that means your vertical dimension is not correct. So after that, you insert the lower occlusal plane in patient's mouth and try to reduce till you get the same reading. Till you get the same reading. Then उसके बाद आप क्या करें? This is called vertical dimension of rest. उससे आप 2 से 4 मिलीमीटर इसको और नीचे वाले को और कम कर दें. Reduce 2 to 4 millimeter further from your lower occlusal rim. You never touch the maxillary rim. You reduce it down from your lower occlusal rim 2 to 4 millimeter further. So that would give you vertical dimension of occlusion. See here, VDO or OVD, both the terms we used to use. So what is the vertical dimension of rest? From vertical dimension, just focus here on the last line. Vertical dimension of rest minus 2 to 4 millimeter is equals to vertical dimension of occlusion. What is this 2 to 4 millimeter?
See this is your vertical dimension of occlusion. So when the upper and lower occluding units are meeting together, this is in your dentate patient. But in edentulous patients, you do not get this facility. Vertical dimension of rest minus IOD, this interocclusal distance 2 to, जिसको आप freeway space भी कहते हैं, is equals to vertical dimension of occlusion. Do not confuse yourself. Vertical dimension of rest minus 2 to 4 millimeter. अभी इस 2 to 4 millimeter को हम discuss करते हैं. What is this 2 to 4 millimeter distance? See here again, this is the interocclusal rest space जिसको आपको मैंने अभी freeway space कहा था. वो क्या चीज है? See this vertical dimension of rest. ये yellow line पे focus करें. This is your vertical dimension of rest. This is vertical dimension of rest. Whatever this reading is coming there. You minus 2 to 4 millimeter. यानी ये थोड़ा सा इससे ऊपर कर लें इसको, ठीक है? यानी आपका जब आप vertical dimension of rest, for example, if it is 70, your 66 तक जो है, that is your vertical dimension of occlusion. Means 2 to 4 millimeter उससे minus कर दें, that is your vertical dimension of, this white line is your vertical dimension of occlusion. That is 2 to 4 millimeter lesser than the vertical dimension of rest. This 2 to 4 millimeter gap is your interocclusal rest space, or this called freeway space. As I told you, when your muscles contract, they need a space where they should regain their energy. And that is always a vertical dimension of rest. सर ये जो वैल्यू 2 to 4 मिलीमीटर है, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है? मतलब 4 क्यों नहीं है, 2 to 4 क्यों है? ये जॉब की वजह से, मतलब स्केलेटन जॉब की वजह से ये डिफरेंट वैल्यू है, या एक रेंज बताया गया है? और ये एक रेंज बताई गई है. पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन हो सकती है ना, किसी में 2 मिलीमीटर हो सकता है, किसी में 4 मिलीमीटर भी हो सकता है, बट एट लीस्ट यू हैव टू कीप इट 2 मिलीमीटर. समझ रहे? अगर आपने ये गैप नहीं रखा 2 मिलीमीटर या 2 से 4 मिलीमीटर, तो आपके मसल्स फटीक हो जाएंगे. अभी आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर आप ये स्पेस नहीं रख पाते, यू फेल टू एस्टैब्लिश दिस स्पेस, तो फिर क्या होगा, है ना? ये जहन में सवाल आएगा. लेकिन वैल्यूज हमेशा रेंजेस में होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती कभी, क्योंकि पेशेंट्स में हमेशा वेरिएशंस होती हैं. समझ आ रही है बात की? जी सर, जी सर. थैंक यू सो मच. So this freeway space is always, you will learn this thing in your orthodontics as well. This freeway space is very, very important. So this is the gap. When you are seated in a relaxed state, physiological rest state के अंदर आप बैठेंगे, तो you would have this space. Why this space is important? To regain the energy of your muscles there. Second thing, if you speak, you need this gap there. If you keep the teeth, vertical dimension को बढ़ा देंगे, interocclusal distance नहीं होगा, आपके दांत आपस में मिलते रहेंगे, you are not be able to articulate different sounds there. ठीक है? आपसे बात नहीं हो सकेगी फिर. ठीक है? This is the gap there. When you are seated in a relaxed state, you always would have a gap between your teeth. This is called interocclusal distance or freeway space. So if you minus OVR minus OVD, that means vertical dimension of rest से minus कर दें OVD, तो आपको IOD मिल जाता है. Means 2 to 4 millimeter gap है ये. अगर आपका inadequate होगा interocclusal distance, या जिसको आप freeway space करें, तो इस तरीके की appearance देखें. यहाँ पर, यहाँ strainy appearance है, nose chin elongation है, मीन्स स्टैटिक नहीं आ पा रही, ज्यादा फुलनेस सी महसूस होगी आपको. इनकॉम्पिटेंसी मीन्स फोर्सफुली लिप्स आर क्लोजिंग डाउन देयर, सो दैट स्पॉइल होल ऑफ योर स्टैटिक्स देयर. फिर दूसरी चीज क्या होगी, आपके दांत जो होंगे हर वक्त मिलते रहेंगे, यू वुड हैव अ फटीग ऑफ योर मसल्स देयर, यू आर नॉट बी एबल टू मैस्टिकेट द फूड comfortably there. Second thing is कि clicking of teeth होगी. You need space between your teeth while you are articulating different sounds there. वो space नहीं होगी तो दांत आपस में हर वक्त मिलते रहेंगे. You are not be able to control the movement of your jaws there. So हर वक्त clicking sounds produce होते रहेंगे दांतों में. ये अक्सर complain होती है complete denture patients में कि मेरे दांतों में से आवाज आती है जब मैं खाना खा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ. तो आप समझ जाएंगे your vertical dimension is not correct there. Then
डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, जब आपका फ्री वे स्पेस नहीं है, दैट मीन्स आपका हाइट ऑफ ओक्लूजल प्लेन ठीक नहीं है, आपने ऊपर कर दिए हैं दांत। जब ऊपर कर दिए तो आपकी डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग से भी ऊपर चले जाएंगे दांत, तो फिर आपकी फूड मैस्टिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी। फिर ज्यादा फोर्स एक्सेशन की वजह से हर वक्त मसल्स फोर्स लगाते रहेंगे ओवर योर रिज, यू मे हैव अ ट्रॉमा टू योर एल्वुलर रिज, यू माइट हैव अ exaggerated bone resorption because of the stresses all the time, exerting over your mandibular area. So this is when your interocclusal distance is not adequate there. When you have too much space there, आपने ज्यादा केयरफुल हो गए, 2 to 4 मिलीमीटर होना चाहिए था, आपने 8 मिलीमीटर कर दिया या 6 मिलीमीटर कर दिया या 10 मिलीमीटर कर दिया. So you may have more closure of the jaw. नोज चिन अप्रॉक्सीमेशन नजर आएगी आपको, ये क्लोज नजर आएंगे. ज्यादा डीप आपको फेशियल जो फीचर्स हैं वो नजर आएंगे, स्पेशली दिस नेज़ोलेबल फोल्ड आपको ज्यादा डीप नजर आएगा. अब आपको यहाँ पर भी जो पाउट होगा ये भी ज्यादा डीप नजर आएगा. लिप सपोर्ट प्रॉपर महसूस नहीं होगी. व्हेन यू आर क्लोजिंग डाउन योर जॉस मोर, योर टंग स्पेस इज नॉट गोइंग टू बी एडिकेट देयर. जब जॉ ऊपर जाता है तो ज्यादा स्पेस टंग की ऑक्युपाई होती है. योर टंग इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल देयर. टंग बाइटिंग के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर. चीक बाइटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. पेशेंट्स की मेस्टिकेटरी एबिलिटी सही नहीं रहती. ज्वाइंट के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज्वाइंट एक खास हाइट के ऊपर कंफर्टेबल फील करता है. देयर अरेंजमेंट, देयर मैकेनिक्स इज established according to this specific height of your muscles there. So your mastication will not be there. It is always be compromised. Then your tenacity of your tissues is not going to be reestablished there. Your mastication compromise, your aesthetics compromise, cheek biting would be there. Then finally, in a long-term basis, you might have problems in your joints as well. जिसको आप TMD भी कहते हैं. It is written in your complete denture books, but Dawson used to say you never got this problem. लेकिन आप अपने आप को confuse ना करें, वो जो post graduate level पे हम उन चीजों को discuss करते हैं. But at this level, you just keep this thing in your mind कि if you have reduced vertical height, you might have problem in your joint as well. किस तरीके से हम establish करें vertical dimension को? There are two methods, two categories. मैकेनिकल या प्री एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी जब पेशेंट आपके पास दांत निकलने से पहले आ जाए तो आप उस वक्त कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जब दांत निकलने के बाद आए तो आप किस तरीके से करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और पोस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड. देयर आर टू कैटेगरीज. तो पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, प्री एक्सट्रैक्शन कैटेगरी जो होती है. वी हैव डिफरेंट मेथड्स देयर. सारों को एक दफा देखते हैं कौन कौन से, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं. So we have profile radiographs, we have photographs, we have cast, then we have sloth lead wire method, उसको भी डिस्कस करते हैं. फेस मास्क मेथड, Swenson मेथड भी कहते हैं, जिसको फेशियल मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ आपको दिखाया हुआ है, दिस इज योर बुलीज गेज. तो इसी तरह से हम गेजेस को भी यूज कर लेते हैं. दिस इज योर रेडियोग्राफ जो हम नॉर्मली ऑर्थोडोंटिक्स में कराते हैं. ओब्लिक व्यू जो होता है, लेटरल ओब्लिक व्यू, उसमें आप देखें सॉफ्ट टिश्यूज आपके विजिबल हैं. अब आजकल डिजिटल रेडियोग्राफ्स हैं, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज. यू जस्ट मार्क 2 points, one at your chin and another at your base of your nose, and measure the distance. While you, if this radiograph is available with you and your patient got edentulous, so then you can use this radiograph if you have this radiograph in your record there. But it's very difficult, very difficult. Same recording, same reading you can try to re-establish over your patients there. ये सिर्फ एक फिलोसफिकल बात है, करना नामुमकिन है. इसी तरह से आपके पास ह्यूमन साइज या प्रोफाइल फोटोग्राफ जिसको आप कहते हैं वो हो, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नोज टू चिन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेके. देन कास्ट of teeth in occlusion. अगर आपको ये past में क्या होता था, when your patient is going to be edentulous, having few teeth left behind, they used to have cast
in their hand, they used to mark 2 points, one at the base of your frenum in maxilla, and other is at the base of your mandibular frenum there, and try to measure this distance, and then try to re-establish this distance in patient's mouth when patient got edentulous. देन स्वेंसन मेथड है आपके पास, फेशियल फेस मास्क मेथड है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, इसमें इंप्रेशन लेते थे पेशेंट के फेस का पूरे का, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एल्जिनेट से इंप्रेशन ले लिया या प्लास्टर ऑफ पेरिस से इंप्रेशन ले लिया और उससे मास्क बना लिया, व्हाइल द पेशेंट व्हेन द पेशेंट वाज यू नो डेंटेड एंड वी नो दैट कि पेशेंट इज गोइंग टू बी अ edentulous इन फ्यूचर, इंपेरेटिव वो उनका प्रपोजल्स होते, इस तरह का एक फेस मास्क बना के रख लेते थे, जब पेशेंट इडेंचुलस होता था तो इसी फेस मास्क को पेशेंट के मुंह पे लगाते थे, तो जॉ का डिस्टेंस आपके पास सेम आ जाता था दोनों का। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कोई आजकल एग्जीक्यूशन नहीं है इन मेथड्स की। देन यू हैव प्रोफाइल स्लॉथ, लेड वायर लेते थे, लेड वायर को इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर अडॉप्ट करते थे पूरा यूं करके, और उसी वायर को जो वो शेप लेती थी उसको कार्डबोर्ड के ऊपर रख के कार्डबोर्ड को कट डाउन कर देते थे, इस तरीके से यूं कट डाउन कर देते, और वी यूज टू कीप दैट इन आवर रिकॉर्ड व्हेन पेशेंट गॉट edentulous, वी यूज टू यूज दैट मेथड, लेड वायर अडॉप्ट करते थे पेशेंट के मुंह। देन यू हैव फेशियल मेजरमेंट्स, उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डेकोमीटर यूज होता था, विलीज गेज मैंने पिछले एक दिखाया, अभी आगे दिखा देता हूं आपको, दिस इज योर विलीज गेज, ठीक है, ये विलीज गेज यूज होता था, दिस इज योर डिवाइडर, यू कैन यूज दिस डिवाइडर्स देयर। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल थर्ड क्या होता था, इस कॉन्सेप्ट के तहत यू कैन डिवाइड द फेस इनटू 3 इक्वल हाफ्स, मींस फ्रॉम फोरहेड टू योर बेस ऑफ योर नोज, और फ्रॉम बेस ऑफ योर नोज टू बेस ऑफ योर nasion to your base of your nose, from forehead to your nasion to your base of your nose, and from base of your nose to your chin. This distance in all the halves, this is equal 4 half है, ये इसको equal 4 halves कहते हैं, ये equal 3 नहीं है, equal 3 में हम यहाँ से लेते हैं, base of nasion to base of your nose, base of your nose to your chin. So you can divide whatever the concept you follow, these all the readings must be the same. From here to here, suppose if you are getting 30 centimeters, same 30 centimeters you will get here. And the same 30 centimeters you have to establish here as well, while you are establishing the vertical. This method you can execute at the moment as well. This is very effective method. Then you have physiological methods, जो हम अब करते हैं। हमारे पास पेशेंट डेंटेट नहीं आता, हमारे पास पेशेंट आता है edentulous. So in an edentulous patient, what we used to do, we used to focus on your physiological rest position. हमारे पास vertical dimension of occlusion नहीं होती, हमारे पास vertical dimension of rest होती है, तो उस rest vertical dimension को target करते हैं, उससे 2 to 4 millimeter माइनस कर देते हैं, तो we used to get the vertical dimension of occlusion. So क्या करते हैं हम उसमें, फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन मैंने आपको बताया, पेशेंट को रिलैक्स सीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका हेड अपराइट रखते हैं, सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए पोस्टीरियरली, व्हाई, बिकॉज योर ग्रेविटी यूज्ड टू इफेक्ट योर जॉ पोजीशंस. देन आस्क द पेशेंट टू swallow and relax, moisten the upper lip with the tongue, so you can take a reading from nose to chin, mark 2 points at base of your nose and your chin, or at the tip of your nose and the chin, and then measure the distance. Niswanger method में 3 methods को combine कर देते हैं, एक तो ये होता है swallow and relax, then sound, and then this swallowing, this moistening the upper lip with the tongue and relax, take the reading, then ask the patient to say sound, then again take the reading, then ask the patient to swallow and relax, again take the reading. Take 3 readings, and these all 3 readings must be coincidental with each other, must be matching with each other. If they are matching, that means your vertical dimension of rest is accurate. And this method is called Niswanger's method. That was established in 1934. It is quite accurate method. Nowadays we used to use this method, Niswanger's methods. You can use these sounds as well. F and V sound is very effective, but I used to use this sound while we are doing the trial. जब ट्रायल पर आप वर्टिकल डायमेंशन को वेरीफाई करते हैं, जब आपने दांत लगा लिए होते हैं, फिर हम देखते हैं कि अपर लिप
सॉरी अपर टीथ लोअर लिप को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर वो कर रहे हैं दैट मींस एफ कहने पे टच करते हैं, दैट मींस योर वर्टिकल डायमेंशन इज करेक्ट देयर. देन यू हैव अ क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस, जिसको आप सिल्वरमैन मेथड भी कहते हैं. इसको देखते हैं ये क्या है. Actually, when there do not make yourself confused with the freeway space. This is different from your freeway space. Freeway space is 2 to 4 millimeter, but this closest speaking space ranges from 1 millimeter to 9 millimeter, even sometimes 12 millimeter तक भी range करती है. ये कब आप इसको evaluate कर सकते हैं? How you can recheck it? You just ask the patient to say S, prolong S. Prolong S कहने पे you always have a space between your upper and lower teeth. You always used to get this space. If this space is not there, your vertical dimension is, you know, you have increased the vertical dimension, और आपके पास closest speaking space नहीं है, that means you are not be able to pronounce this sound. S sound कभी भी नहीं होगा अगर आपका vertical बढ़ा हुआ होगा. So Silverman closest speaking space method is the confirmatory method. मैं आपको हमेशा कहूंगा कि इसको एज ए कंफर्मेशन यूज करें, एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज मत करें इसको वर्टिकल डायमेंशन की. So how come this is different from your this freeway space? The occlusal rims are placed in patient's mouth and the height is adjusted until a minimum of 2 millimeter of space exists when the patient is pronouncing the letter S. आपने दोनों रिम पेशेंट के मुंह में डाले हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि रिम्स थोड़े मोटे होते हैं दांतों से, इसलिए पेशेंट इज नॉट बी एबल टू pronounce a clear S. But you just ask your patient to count 60 to 70, 61, 62, 63. अगर ये कह सकता है या उर्दू में 60, 61, 62, 63 अगर ये काउंटिंग कर सकता है तो ये काउंटिंग करवाएं और जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द गैप बिटवीन योर अपर एंड लोअर rims. At least 2 millimeter of gap must be there. At least. अगर ये नहीं है, that means कि your closest speaking space is not there and your vertical dimension is not correct. Nose chin distance मैंने आपको बताया था कि आपको पीछे भी दिखाया है, आगे भी दिखा देंगे कि नोज चिन अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से होती है और इलोंगेशन किस तरीके से होती है. लिप कॉम्पिटेंसी जब वर्टिकल डायमेंशन बढ़ी हुई थी मैंने आपको बताया कि लोग देखें किस तरीके से फोर्सफुली लिप्स को इसमें क्लोज किया हुआ है. नेजोलेबल फोल्ड मैंने आपको बताए थे, ये जो नेजोलेबल फोल्ड्स होते हैं इनमें अगर आपकी ऑब्लिटरेशन हो जाए या डीपनिंग हो जाए तो आपकी वर्टिकल डायमेंशन ठीक नहीं है. सॉलोइंग थ्रेशोल्ड, इसमें ये करते हैं अपर रिम पेशेंट के मुंह में डालते हैं, लोअर रिम के ऊपर सॉफ्ट बीज वैक्स लगाते हैं. बीज वैक्स कहां से आएगी आपके पास? जो आपके आर्टिफिशियल टीथ आते हैं जिस स्ट्रिप पे लगे हुए होते हैं उसमें वो बीज वैक्स होती है, उसको निकालें और उसकी कोन बना के लोअर जो प्लेट होती है बेस प्लेट उसके ऊपर लगा दें और पेशेंट के मुंह में रख के पेशेंट को कहें सॉलो करो. सो व्हेनेवर यू सॉलो your teeth would come in light contact during swallowing. You can observe on yourself when you swallow you have a light contact of your upper and lower teeth. This is your vertical dimension of occlusion. So during swallowing, you always achieve occlusal vertical dimension. If your vertical dimension is not correct, you are not be able to swallow the food comfortably. आपका पेशेंट कहेगा मुझे swallow करने में भी परेशानी हो रही है फूड को. ये कुछ जदीद methods हैं, the most advanced method where we use certain gadgets which are not feasible to use in your practice there. These are used in your researches there, boost PowerPoint method, then little method and electromyography. बूस्ट पावर पॉइंट मेथड में जल्दी जल्दी कहते हैं ये एक आपके पास बायोमीटर यूज होता है इस तरीके का, इसको इसके ऊपर ये स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू से इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. वेयर योर पेशेंट फील कंफर्टेबल, जहां पेशेंट आपको खुद बताएगा कि नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल. व्हेन यू इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमेंशन योर पेशेंट विल नॉट फील कंफर्टेबल. व्हेन यू रिड्यूसेस द वर्टिकल डायमेंशन पेशेंट विल नॉट फील कंफर्टेबल. वेयर patient is adequately comfortable, that is the area. Or sometimes this is attached with the monitor there, the computerized monitors. Patient exert the force and you will get the force there. Where your patient is able to generate maximum force, that is the area of vertical dimension of occlusion. लिटिल मेथड भी उसी की ही कॉपी है जैसे पीछे मैंने आपको, इसमें सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट जरा डिफरेंट यूज होता है. यहाँ आप उसको मॉनिटर से अटैच नहीं करते हैं, यहाँ पेशेंट परसेप्शन
पर बेस करते हैं. Patient would guide you. When you increases the height, patient would not be comfortable. When you reduces this height of the screw there, patient is not going to be comfortable. Wherever your patient is adequately comfortable, that is the height to establish in your wax rims there. That is your vertical dimension of occlusion. Electromyography आजकल बड़ी कॉमन सी इन्वेस्टिगेशन है फॉर योर मसल्स एक्टिविटी देयर. इसमें आप अटैच कर देते हैं this type of machine to your muscles there and try to find out the maximum force generation. जहां maximum force होती है वही आपकी vertical dimension होती है. Then your incisive papilla distance, आपके incisive papilla से लेके lower incisor तक का distance जब patient jaw close करता है, this is suppose your incisive papilla, और यहां से लेके यहां तक का distance 6 मिलीमीटर होना चाहिए incisal edge तक का वर्टिकल डिस्टेंस 6 मिलीमीटर होना चाहिए. और जब लोअर जॉ के टीथ आके मिले तो लोअर जॉ का टीथ यहाँ आके ओवरलैप करेगा 2 मिलीमीटर. तो यहाँ से लेके लोअर जॉ के टीथ का इंसाइजल एज का डिस्टेंस 4 मिलीमीटर होना चाहिए. अगर ये 4 मिलीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मिलीमीटर है, दैट मीन्स योर वर्टिकल डायमेंशन इज ओके. पैरेललिज्म ऑफ रिजेस, जब आप आर्टिकुलेटर पे देखें तो ये आपको पैरेलल नजर आनी चाहिए एक दूसरे के साथ. अगर ये एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, दैट मींस योर वर्टिकल डायमेंशन इज नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड. ओल्ड डेंचर से भी आप वर्टिकल डायमेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं. ओल्ड डेंचर से आप जो है इसको वर्नियर कैलिपर से इसकी हाइट ले लें किसी भी एरिया में और उसको ट्रांसफर कर दें हाइट को टू योर वैक्स रिम्स दें. दोबारा से एक दफा अगर आपकी वर्टिकल डायमेंशन बढ़ी हुई है तो क्या होगा, मींस योर फ्री वे स्पेस इज नॉट गोइंग टू बी देयर. तो फिर क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, ट्रॉमा होगा, रिजॉर्प्शन होगी, क्लिकिंग ऑफ टीथ होगी, रैपिड वेयर ऑफ योर एक्रेलिक टीथ, स्ट्रेन इलोंगेटेड फेज अपीयरेंस होगी. इस तरीके से सी देयर इनकॉम्पिटेंसी ऑफ योर लिप, फोर्सफुली क्लोज कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रेनी अपीयरेंस आ रही है, इलोंगेटेड फेस है आपका, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, मसल्स आर नॉट कंफर्टेबल देयर, दैट्स व्हाई यू वुड गेट स्ट्रेनी obliterated appearance there. ठीक है, ये सारी की सारी फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी. रिड्यूस वर्टिकल हाइट होगी तो क्या होगी, च्यूइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, चीक बाइटिंग होगी, एंगुलर खलाइटिस होगी, देन डिस्टॉर्शन अपीयरेंस, डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस होगी, एंड टीएमडी होगी. डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस किस तरह, यहाँ देखें अगर आप, तो यहाँ आपका नोज चिन अप्रोक्सीमेशन हो गया है, या इससे ज्यादा अच्छे तरीके से इस तस्वीर में देखें, where you would have a closer vertical height, you would have nose chin approximation, closure हो गया है, ज्यादा जो है आपके जो facial expression muscles are not optimized, that's why you would get more lax appearance there. Corner of the mouth droop कर रहा होगा आपका, and this corner जो maxillary muscle, sorry, this lip है, that is drooling up over your lower lip there, and you would always lose control over your saliva. The patient would have squeezing up of your saliva from the corner of the mouth. That's why patient used to have angular colitis again and again. Your masticatory efficiency will not be there because your muscles are not be able to exert the maximum force there. So these all consequences will be there. Hope you understand this vertical dimension. Any question you want to ask? I think this is enough for today's lecture. Inshallah, we will discuss next time the centric relationship. Horizontal relation, jaw relations में inshallah discuss करेंगे. Any question you want to ask? हाँ सर, थैंक यू सो मच. You're welcome. काश सर ये मतलब प्रैक्टिकली होता पेशेंट के सामने और आप बताते तो बहुत अच्छी तरह हम लोग समझ जाते हैं. बेटा अब आपका आगे जो प्लान है वो यही है कि अभी हम आपको पढ़ा दें, एक दफा आप इनको रीड कर लें, फिर आप जब आएंगे यहाँ पे तो 3-4 महीने जो आपकी पोस्टिंग्स होंगी उनमें ये जल्दी जल्दी हम कराते जाएंगे, फिर देन यू वुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, ये जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है बिल्कुल इसी तरह से एग्जीक्यूशन होगी इसकी इंशाल्लाह. So inshallah next Saturday we would have a centric relationship, horizontal relationships को discuss करेंगे.
Take care. Have a nice day. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.